Okay, question number 5. In the question number 5, right, you can see this also belong to the NCERT. The question number 5 is this. This is a plane which definitely, right, plane is moving toward in that direction. Suppose it is a jet planes, and let me draw. This is VJ and ejected something means it's उसने कुछ फेंक दिया है ना, या फिर तुम बोल सकते हो जेट प्लेन्स का जो तुम्हारा कंब्यूशन है वो जो इजेक्ट करते हैं वो इस डायरेक्शंस में है, and that means say let me say that this is the velocity of the ejection. Is it right? So if they two are in the opposite direction, so you know it's written there the velocity of what ejection with respect to jet is 1500, if I'm not mistaken, yeah, 1500 kilometer per hour it is given, and velocity of the jet is 1000, sorry, it is what 500 kilometer per hour. Is it right? Both are given to you. And now what is your relative? Definitely this is a relative velocity already written with respect to z. तो जब रिलेटिव में आ गया तो सोच के देखो, अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव हम लोग कैसे लिखते हैं? So we write velocity of the ejection with respect to z is what? Velocity of jet plus velocity of, sorry, and jet. We write this way. Plus is the addition. या ऐसे लिखो या फिर दोनों में माइनस डालो. Both are same. Now according to this, now what is how you write this velocity of it? So velocity of the ejection is equal to velocity of ejection with respect to jet minus velocity of the jet. So I think it is 1500 minus 500, it will be how much? 1000 what kilometer per hour. Is it right? In this way we can give the answer of question number 5. Ye relative ka question hai. Is it right? And let me see the question number 6. In the question number 6, it is written that a car is moving in a straightway highway with a speed of 126 km per hour brought to stop. तो brought to stop मतलब final क्या हो गया, फिर stop तो हो गया ना, final इसका मतलब 0 and starting is the 126, but the units are not same, so that's why I have converted this into the meter per second, and you all know it is 5 by 18 multiply करने से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? As is given to you, v is 0. Finish. Now your target is the acceleration. Is it right? And now tell me which acceleration it is. Definitely it is minus retardation. This is the first question. So now tell me which equation of motion will help you to find out this. Very simple. S u v दोनों है, तो मेरे ख्याल से by u square, sorry my mistake, by v square is equal to u square plus 2as. I think it will help us. Is it right? तुम देख भी सकते हो फाइनल 0 है, इनिशियल इज 35 स्क्वायर प्लस 2as, where s is how much? Your 200. I think your, if I make it side there ना, तो a is equal to ऑटोमेटिकली ये माइनस आ रहा है, माइनस 35 स्क्वायर by 400. देखो माइनस विल गिव, एंड वी नो इट इज अ रिटार्डेशन, दैट्स व्हाई वो माइनस खुद ब खुद देता, तुमको लिखने का जरूरत भी नहीं है. Is it right? So let me write the answer quick for you, and the answer is here. It is something what is minus 3.06. Calculation you can do it. Is it clear? Now after that they have asked how much time it takes. अब acceleration निकलने के बाद तो कोई भी equation लगाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा. So let me use this one of the equation. V is equal to u plus at लगा लेते हैं इसमें, टाइम निकल जाएगा तुम्हारा. फाइनल 0, initial is 35, acceleration is minus, so let me put minus here. 35 square by 400. Try to always put the fraction. Decimal is not, कभी कभी decimal perfect होता है तो ठीक है, but mostly not, so better you use the fraction one. And the t. So in this way you'll get your time. Calculation कर लेना. I think it is 35. Let me do like this, है ना. 35 is equal to 35 square by 400. T, I think is one of the 35 is cancelled, therefore t is equal to क्या लिखेंगे 400 by 35, है ना. I think your answer will be 11.4. check it, your answer match करेगा तो ठीक है ना, otherwise you can ask the question. So this way we can solve it. I think it's very simple question, है ना. So let's see the question number 7. Is it right? So in the question number 7, just see here. थोड़ा सा questions is very simple, so let me draw a diagram.
because in physics what happen, if you draw a diagram, then I think your concept will be automatically clear. So this is a train A and this is a train B. Both are 400 meter is there, right? The distance of the train 400 is there. ये भी 400 का ही है तुम्हारा, right? So let me write only in the one, and there is some distance between the two. Is it right? So how we measure the distance between the two? Can we say the distance between the two is this? No. जब भी डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन मेजर करना है तो यू हैव टू से स्टार्टिंग ऑफ वन ट्रेन विद द स्टार्टिंग ऑफ द अनदर ट्रेन और द एंडिंग विद द एंडिंग, ऐसे करके मेजर करना है. सो लेट मी टेक द स्टार्टिंग पॉइंट हियर. तो फर्स्ट क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. बोथ आर मूविंग विद द 72 किलोमीटर एंड ट्रेन ए इज मूविंग एंड ट्रेन बी ड्राइवर डिसाइड दैट आई विल ओवरटेक द ट्रेन ए. इज राइट? डेफिनेटली अगर ये ओवरटेक करेगा तो ही नीड टू एक्सीलरेट हिज इंजन एंड ही डज इट. इसने किया, उसने 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलेशन बनाया जिसकी वजह से उसने ओवरटेक किया इसको. यू नो दैट व्हेन योर एक्सीलेट इज देयर डेफिनेटली योर वेलोसिटी इंक्रीजेज, जिसकी वजह से वो उसको ओवरटेक कर सकेगा. सो ही हैज ओवरटेक इट एंड इट टेक्स द 50 सेकेंड्स. मतलब 50 सेकेंड के बाद जो गार्ड है बी का, उसने ड्राइवर ऑफ ए को ब्रशेस दिखाया, मतलब ही पास दैट. इज इट राइट? वो पास हो गया इसका मतलब. तो दिस इज द पोजीशन इज नोटेड. दिस इज लेट मी से एस बी स्टार्टिंग टू द स्टार्टिंग एंड दिस इज एस ए स्टार्टिंग टू द स्टार्टिंग. क्लियर? नाउ लेट मी फाइंड फर्स्ट अबाउट द डिस्टेंस. यू हैव अ स्पीड, यू डोंट हैव फाइनल, तो डेफिनेटली एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ it स्क्वायर लगा देंगे इस इक्वेशन को. बट हियर नो एक्सीलेशन, सो आई विल पुट द पार्ट इज जीरो. तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्सीलेशन है ही नहीं. According to that, I got 1000. Is it right? Let me see about the train B. Train B में acceleration भी है. So again, this is speed तो तुम्हारा 72 and 72 I have converted into the meter per second. So it is 20. 20 into 50 time take is 50 plus half of a t square, a t square. चलो इतना आ गया. अब distance कितना बचा? So how we find the distance? Definitely from here to here. तो इफ इट इज एस बी, ऐसे माइनस कर लेंगे. माइनस से कौन है? यहाँ से है. ये तो तुम्हारा ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया. चलो इतना. तो दिस इज एस बी माइनस एस ए. नहीं, 400 भी माइनस करना है. सो आई विल से 2250 माइनस 1000 माइनस 400. ये पूरा एस बी हो गया ना. इसमें से इतना माइनस कर देंगे, ये भी माइनस करेंगे, तब बनेगा तुम्हारा डिस्टेंस. सो दैट्स व्हाई आई विल मेक इट माइनस ऑल्सो. So I think it is कितना आ गया तुम्हारे पास? 1250 minus 400. So I think it will become कितना आ जाएगा? 200 माइनस करने से 50, 250, 150 मतलब 850. 850 और 4 8 12 13 12 50. ठीक है. So that means 850 is the original distance between the two tips. Is it clear? Yes. Dear student, in this question number 8, just see here, might you will confuse by reading the question. Question पढ़ने के बाद तुमको confuse होगा कि हमने ये direction कैसे लगाया. So it was written there कि B overtakes A. A is a vehicle, B is also a vehicle, C is also a vehicle. Both are in a track and B wants to overtake the A so that it will not collide with the C. क्योंकि वो overtake कर जाएगा तो C के साथ collide नहीं करेगा. ये है इसका question. तो जब कोई किसी को ओवरटेक करता है तो डेफिनेटली वो सामने से तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा? पीछे से ही करेगा. इज इट राइट? ओके, सो दिस इज द टारगेट. स्पीड ऑफ ए, बी एंड सी. डेफिनेटली 5/18 मीन्स यू नो कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड. कर लिया. अब क्वेश्चन आ रहा है, इन इट इज रिटन दैट कि बी ने ओवरटेक करने के लिए डेफिनेटली बी और सी दोनों का स्पीड देखो सेम है, तो फिर ओवरटेक कैसे करेगा? वो तो होगा ही नहीं. बोथ विल रीच एट द सेम टाइम. सो फॉर दैट he accelerate, उसने acceleration किया है. Is it right? So after acceleration the question तुम्हारा कुछ ऐसा है, right? What is the minimum acceleration of the B required to avoid the acceleration? ये है question. So now अगर B का acceleration निकालना है तो very good. First let me know कि इसको कितना time लगेगा. The time taken by the C, within this time he will accelerate. Is it right? ये इसका target होगा. So let me first find the C.
लेकिन C जब मूव करके आ रहा है तो A भी जा रहा है, A तो स्टैटिक नहीं है ना. If A is static, definitely I will use only C's speed. But here A is also moving, तो यहाँ पे किसका आएगा? Relative का आएगा. So what is the relative velocity of C with respect to A? Both are opposite. क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा. So A का कितना है? 10. C का कितना है? 15. Is 25 meter per second. Keep it in mind, right? And let me now find the time taken by C to cover distance. अब यहां पे बोल दे कि जब इसका डिस्टेंस कितना था, आई थिंक 1 किलोमीटर, तब बी ने इसको ओवरटेक किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, या 1 किलोमीटर. इज इट राइट? सो डिस्टेंस ऑल्सो यू हैव, सो वेरी सिंपल, टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड. Distance is 1 kilometer. Let me write in meter, and speed was 25. I think it is 4 seconds. चलो टाइम निकल गया. Within 4 seconds now B will accelerate, है ना? Acceleration निकालना है इसका. So once again let me find first the speed of this. But once again फिर से वही कहानी. अब ये जब मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव आ जाएगा. So let me find the what? B with respect to A. The speed of B, both are in same direction, minus आ जाएगा. So I think it is 15 minus 10 is 5 meter per second. हो गया? ये आ गया relative velocity of B with respect to A. Now you need acceleration. अब लगाएंगे क्या? Velocity you have time also. Time भी तो वही use करेंगे. Time is also there, velocity is also there. So definitely come which part? How much? The distance. यहाँ पे भी 1 किलोमीटर और यहाँ पे भी तुम्हारा 1 किलोमीटर. When 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन बोथ जब था, तब उन्होंने ये इवेंट शुरू किया, राइट? डिस्टेंस ऑल्सो यू हैव, S is equal to 1000 मीटर. सो आई थिंक 22 S is equal to UT plus half of AT square. ये suitable रहेगा. Speed is already there. U. So S was how much? 1000. Speed was how much? 5 into time कितना था तुम्हारे पास? 4 plus half A you have to find. Time is once again how much? 4 4 just 16. So I think it is 8, है ना? चलो 5 4 जा 20 इधर कर लेते हैं, 20 को इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? Minus if it is 1000 minus 20, it is equal to 980, which is equal to 8 A. So therefore acceleration is equal to 980 by 8, if I am not mistake. Is it right? It is, sorry, some mistake is there definitely. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया my dear, sorry. It is not 4, it's 40 हो जाएगा, 4 कर लिया था, sorry for that. I think it will be 40. So 40 में से 5 4 200 हो जाएगा, 200 होने से यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 800. And now you have to subtract what? 800 by 8. Sorry, here also time will be little change. यहाँ पे हो गया 4 4 1600, right? I think 800, 800 is there. Acceleration is 1, definitely 1 meter per second square. So I think yeah, I have to write 800, sorry. So now I think you got it, right? Once again time देखो 40 सेकेंड है, तो टाइम इज 40 सेकेंड, स्पीड इज देयर, डिस्टेंस भी वही है, S is equal to 1000, दिस इज 5 4 20, 200, 1000 minus 200 is 800, और फिर यहाँ 800 बचा, डिवाइडेड कर लो, 1 मिल जाएगा. Is it right? Now you have to follow this. This is a type of relative question.